नमस्कार। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर बात करें तो काफ़ी मियादें तो इंडस्ट्री की बजट से पहले ही पूरी हो गई थी, चाहे वो एसीसी की पीएलआई हो या एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी की पीएलआई हो, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल भी शामिल था। साथ में फेम की स्कीम्स थी और स्टेट की स्कीम्स भी थी। लेकिन बजट में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने दो ऐसी ज़रूरी बातें करी जिससे कि ईवी इंडस्ट्री के लिए अब नई राहें खुल जाएंगी। क्या हैं वो दो बातें? पहली बात है जो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी है उसका ऐलान हुआ है। क्या होती है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी? और उसके बाद ग्रीन जोन यानी ईवी जोन्स बनाने के बारे में बात करी। इन दोनों मुद्दों पे हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञों से, किस तरीके से इंडस्ट्री के लिए नई राहें खोलेगा और कितनी तैयार है इंडस्ट्री इसके लिए। हमारे साथ इसके लिए चेतन मैनी जो कि सन मोबिलिटी से हैं वो जुड़ गए हैं, एंड विवेकानंद हलकरे हु जो सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ बाउंड्स वो जुड़ गए हैं। विवेकानंद, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ। जो ईवी जोन्स की हम बात कर रहे हैं, इससे एक बात साफ है कि आगे आने वाले समय में जो अमिताभ कांत ने बात कही थी 2025 में टू व्हीलर्स जो होंगे वो ऑलमोस्ट सारे के सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल ही होंगे, उस तरफ आप कदम बढ़ाते देख रहे हैं सरकार को? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उत्कर्ष जी। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मूव एंड अनाउंसमेंट कमिंग इन बजट स्पीच इटसेल्फ। ये दिखा रहेंगे कि एज एन पॉलिसी में इट्स वेरी क्लियर दैट गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस अबाउट ईवी पॉलिसी एंड ईवी ट्रांजिशन एज सच। तो जो भी मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया स्पीच में, आई थिंक दे आर मेकिंग इट वेरी क्लियर दैट दे आर वेरी सीरियस अबाउट ईवी ट्रांजिशन। चलिए, हमारे साथ चेतन मैनी भी हैं सन मोबिलिटी से। जो लोग नहीं जानते हैं, महिंद्रा रीवा जो आपने नाम सुना था, उसका रीवा जो है वो चेतन मैनी से ही आता है और उसके बाद वो कंपनी आनंद महिंद्रा के पास गई। पर चेतन सर, काफ़ी समय से आप सन मोबिलिटी में बैटरी स्वैपिंग को लेकर काम कर रहे हैं। मुझे आज करीब 2 या 4 साल पहले जब ऑटो एक्सपो हुआ था तब अशोक लेलैंड की बस में भी आपने हमें बैटरी स्वैपिंग दिखाई थी। कितने खुश हैं आप इस ऐलान से? हाँ उत्कर्ष, क्या है कि तीन चैलेंजेस है इलेक्ट्रिक बिजली की गाड़ियों में। एक तो है कि बहुत महंगा है, महंगाई के कारण है कि बैटरी का दाम बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज है, लोग बोलते हैं कि अगर हम चार्ज नहीं होएगा क्या होएगा, चार्ज के लिए 8 घंटे लगते हैं। तो क्या बैटरी स्वैपिंग करता है कि इट एड्रेसेस द इशू दाम का, इट मेक्स द कॉस्ट वेरी चीप। और ऑल्सो क्या होता है कि आप 1 मिनट में आप बैटरी स्वैप कर सकते हो, तो कोई रेंज एंजाइटी नहीं है। अगर आपको थोड़े और किलोमीटर्स जाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंज्यूमर के लिए बहुत ही अच्छा है, दाम कम हो जाएगा, उनका जो कंसर्न रेंज एंजाइटी के बाद है वो चला जाएगा। और ये भारत में काफ़ी 30-40% हमारा इंक्रीज हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अगर बैटरी स्वैपिंग का इस्तेमाल हो जाए। विवेक, आई टेक दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू ऑल्सो। आपसे भी सवाल लूंगा मैं कि स्वैपिंग जो है, बैटरी स्वैपिंग, वो बहुत समय से कि होगी नहीं होगी। गवर्नमेंट ने भी काफ़ी स्टैंड बदला। कई बार नितिन गडकरी कई बार कहते थे कि स्वैपिंग स्टेशन लगाने चाहिए, फिर बाद में उनका मत बदल गया। आप कैसे देखते हैं इस बैटरी स्वैपिंग की जो पॉलिसी है और स्वैपिंग एज अ टेक्नोलॉजी को ईवीज में? हाँ उत्कर्ष जी, वी आर बिग बिलीवर्स ऑफ बैटरी स्वैपिंग फॉर ऑब्वियस रीजंस। जैसे चेतन महीनी सर ने बोल रहे थे कि व्हीकल का दाम कम हो जाएगा विद बैटरी एज अ स्वैपिंग, क्योंकि 40 to 50% of the value of the scooter today is battery, and once you separate that from the equation, the purchasing ability of electric scooter becomes massively bigger, because consumers can buy the scooter at just 45,000 as compared to paying probably 90-80,000 for the scooter with battery. And I think technology wise, it's at Bounds itself we have done close to about 7 lakhs plus swaps. So we have done 700,000 battery swaps already. The technology is decent and mature enough, and there are not many uncertainties in terms of battery swapping. So the technology is ready, the market is ready, the industry is ready. The customer also wins if we do battery swapping as a service. For him, the upfront cost, जैसे आप गाड़ी खरीदना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक स्कूटर में विथ बैटरी एज अ सर्विस, विथ बैटरी स्वैपिंग,
50% तक कम हो जाएगा the cost of the scooter, which is a big thing for a country like India. अभी total two-wheeler penetration ही बहुत कम है इंडिया में, तो we have this unique opportunity for the first time where an electric scooter can cost as low as 45,000 rupees, which is like 10 years पहले जो Honda Activa का दाम था उतने पे अभी आप एडवांस टेक्नोलॉजी वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद सकते हैं लोग. तो आई थिंक इट्स समथिंग टेक्नोलॉजिकली being done by multiple folks in the market, and I think customer also wins. So government abhi budget speech mein jo whatever they mentioned that there'll be a EV battery swapping policy as such, this shows the seriousness, and all parties who have to do certain things for to work as catalyst also will start working on this. चेतन, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा. एक जो बहुत बड़ा सवाल है, इनफैक्ट ऑडियंस के मन में भी है, इंटरऑपरेबिलिटी जिसे हम कहते हैं कि जैसे कि भाई जैसे बाउंस का स्कूटर विवेकानंद बनाते हैं, ओला का स्कूटर है, हीरो का स्कूटर है, क्या सब में एक बैटरी लगेगी, एक साइज़ की बैटरी लगेगी? और एक और सवाल जो है कि भाई सबकी बैटरी की क्वालिटीज़ अलग अलग होंगी, वो भाई बाउंस की बैटरी अलग होगी, ओला की बैटरी अलग होगी, हीरो की बैटरी अलग होगी, तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? दैट्स अ बिग क्वेश्चन. हर आदमी यही सवाल पूछ रहा है इस समय. हाँ, एक चीज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बैटरीज तो हर साल अच्छे हो रहे हैं 5-10%. तो 3 साल के बाद जो बैटरी आपके पास है आपको 50% ज्यादा रेंज मिल जाएगा. तो हमारा पॉलिसी ऐसा होना चाहिए कि अगर कंज्यूमर ने आज एक 2-व्हीलर खरीदा है, अगर 3 साल के बाद उसको 50% ज्यादा रेंज मिल सकते हैं, वो तो बहुत जबरदस्त है, वो तो कभी नहीं होता है. तो पॉलिसी ऐसा होना चाहिए कि ऐसे इनोवेशन को हम कैसे करें. दूसरी बात है कैसे कि सब कैसे यूज कर सकते हैं. तो हमारा आज एक्सपीरियंस हुआ है सेलफोन के मुताबिक कि जहाँ आप सिम कार्ड के दूसरे साइजेस होते हैं, फिर भी हम यूज कर सकते हैं, और आपके पास डिफरेंट ऑपरेटर्स है जो आप अपना प्लान कर सकते हो. तो इसके ऐसे ही हम बैटरी स्वैपिंग, जहाँ साइज का दूसरा हो सकता है, ऑपरेटर दूसरे हो सकते हैं, पर जो है कंज्यूमर को उनके पास ऑप्शंस है कि मैं ऐसे जा सकता हूँ, वैसे जा सकता हूँ, और ये इम्पोर्टेंट है. तो अगर पॉलिसी इन चीज़ों को ध्यान से रख सकते हैं तो ये तो बहुत ही एंड कस्टमर को बहुत फायदा होएगा, और हम बहुत जल्द से जल्द बैटरी स्वैपिंग की बढ़ा सकते हैं इंडिया में. विवेकानंद, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज जो बात चेतन सर ने हमसे कही कि भाई सारे जो प्लेयर्स हैं उनके साथ या तो पॉलिसी ही एक तरीके की बैटरीज लाना शुरू कर दे और पॉलिसी मैंडेट करे कि भाई एक ही साइज की बैटरी होगी. टेक्निकल पॉइंट से मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्या ये केवल स्वैपिंग में इट्स द साइज विच मैटर्स, और या बाकी और भी चीज़ें होंगी जो मैंडेटरी करनी पड़ेंगी सरकार को कि स्वैपिंग पॉलिसी जो है वो काम कर सके? बिल्कुल उत्कर्ष जी, it's just not about the size of the battery. I think there are more things involved. One being the charger. What kind of charger will or should the OEMs use if interoperability should be allowed? And also in terms of when it comes to battery as such, what Chetan sir mentioned is really important, right? Battery is getting advanced at a very good speed, as in the battery tech is changing. Both it is changing at a great speed. So chemistry badal sakta hai, and there are different chemistries also today. Lithium LFP hai, lithium ion hai. There are multiple chemistries also. So we'll also have to think about these aspects, finer aspects on kaise interoperability hona chahiye. Fortunately, irrespective of the chemistry, irrespective of what is inside the battery, as long as charge discharge rates are handled and connector and even the spacing is handled well, I think interoperability can be a good start. The challenges, according to me, will be based on the power of the scooter. Let's say there is a scooter which is 3.8 kilowatt, uses a 3.8 kilowatt motor. They can't take a 2 kilowatt hour battery because उसमें इतना दम नहीं होगा कि वो पावर करे इस मोटर के लिए. So अभी देखना है कि how will that work. So see, अभी क्या हो रहा है, everyone while interoperability is a great thing and should happen, हर OEM ये सोच रहे हैं कि
ये हमारे कंट्रोल में कैसे रहे, क्योंकि for the first time OEMs can make revenue on every kilometer a consumer drives, right? So it's very important that this policy solves for this, and the end consumer should win. So there are finer details. I think this will take couple of discussions. Thank you. Yeah. थैंक यू विवेक। अनफॉर्चुनेटली हम थोड़ा सा टाइम हमारी लिमिट बढ़ रही थी, तो हमारे प्रोड्यूसर मेरे को लगातार बता रहे थे कि भाई टाइम लिमिट यहाँ पे कम है। विवेक बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चेतन सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अब आगे अगर बढ़ते हैं और बात करते हैं कि शेयर बाज़ार के बिग बुल यानी कि राकेश झुनझुनवाला का 2022 पे क्या आउटलुक है, राकेश झुनझुनवाला का बजट पे क्या आउटलुक है, और कौन कौन से सेक्टर्स को लेकर राकेश झुनझुनवाला अब बुलिश हैं। उनसे बात की ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने। आइए सुनते हैं उस बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा। Mr. Junwala, let me first get your thoughts on the union budget. Now, the union budget, do you think both in terms of intention and also in terms of objective, will it be able to accelerate the economy? Because the economy in India has survived the COVID storm, will the budget accelerate it? See, according to me, there are various long-term messages of the budget. First of all, I think the tax to GDP ratio in India is this budget of this year's collections, which I think will be far higher than the budget estimates, is giving us an indication that the tax to GDP ratio in India is going up. Only when that happens, we'll be able to spend money for social welfare and infrastructure. I think that's a very important message. Then I think by not giving away freebies beyond a point, they say that you give a man a fish, he will eat it every day. You teach him how to fish, he will be on his own. So according to me, the real panacea of India's teeming billions is growth. It's only with growth that you'll have greater jobs, greater social welfare. And the manner I was reading about how, when the government is ready to subsidize $10 billion for the manufacture of chips in India. So also there is a lot of strategic thinking in India, in government. So I think growth is the priority. I think is the most important thing for the long-term benefit of all Indians. Poor, rich, whatever. Second thing I feel is, everybody is emphasizing the jobs that will be created by the kind of investment that is being proposed in infrastructure. I think the government investment is important. I think there are going to be far greater private sector investment. If you look at anybody, Mr. Adani, Mr. Ambani, Mr. Agarwal, Anil Agarwal, right, they all want to invest in India. And I think which very important, which nobody has mentioned, everybody is emphasizing on the expenditure on infrastructure, but what will the expense on infrastructure lead to? It will lead to industry being more competitive and efficient. Let's not forget that. I think that's also a very, very important element of the increase in capital expenditure for infrastructure. And it is a bold political statement because that government has preferred growth and fiscal prudence over populism. I think that's a very, very big message. And whatever India is doing, whatever Mr. Modi and his government is doing, is towards long-term sustenance and not short-term gain. Do you think there is a big change in the policy making in India? The budget document is very transparent. There is no changes in taxes when COVID taxes or some tax changes could have come out. The policy making is far more clear and it's much more stable in terms of supporting the entrepreneurship. See, it's like this. Ultimately, India will be built by entrepreneurs. Right? Government has no reason to be in business. And I think Mr. Modi has said this in Parliament. And he wants to respect and encourage fair risk-taking. I think there is no capitalism in this country, there is no socialism, there is realism. And the kind of transparency government is coming out in finance
It's absolutely, I mean, it's very, very encouraging. Today we have the highest foreign exchange reserves, right? We have a very transparent budget. We have no off-balance items now. FCI has been repaid. Air India debt has been repaid. I am personally very optimistic that the tax to GDP ratio of this country will really go through the roof. And this will really allow fair and good government spending. But is this high risk also coming at a time when in general inflation is high, and this budget on the expenditure side, if the supply strain constraints are not taken care of, could stoke up inflation? Well, I don't know whether it can stoke up. See, most of the inflation is commodity inflation. And a lot of the commodities are linked to international prices. So India's increase in consumption of 5% is not going to lead to a spike of commodity prices. India is not still, even now, not such a big consumer of all commodities that Indian consumption going up can really lead to a spike in commodity prices. And really food inflation is not much at all. And 4-5% inflation is desired. 4 to 6% is the average inflation for India. So are you looking at an economy like never before? For the first time, government has a problem of abundance. Corporate balance sheets are not leveraged at all. Retail balance sheet, with the exception of rural balance sheets, it has made a comeback. So it's never been this good for India, can I say that? That's why I'm saying that the credit cycle is behind us. The capex cycle is ahead of us. We have a refreshed corporate sector, right? So now, and sir, we are 140 crore Indians. जहाँ 2 लाख रोज पैदा होता है खाने के लिए, वहाँ काम क्या मंदी होगी? So I'm very, very optimistic. I think also I must say that although the budget figures have been conservative, the economic survey has predicted 8.5% real growth. So I think India is now dreaming on 10% growth and is not way there. But what is more important also is the ease of doing business, the change in the government's attitude. The PLI scheme, I think, can be a big hit. And next year, I think there will be, don't forget, 60% of India's economic services and transport, trade, hospitality, which is a large contributor, was very badly affected last year. So the growth next year in these 3 areas is going to be very high. So we are on a new credit cycle. That credit cycle has embarked. That new capex cycle has embarked, earnings cycle has embarked. How will this earnings cycle or the credit cycle will be different from the last cycle? Well, I don't see any reason to see how it will be different. There will be growth in corporate profits. We are at 4% of GDP in corporate America is 10-11%. We were 8% in 2008. So I think we in the next 4-5 years will reach 8% of GDP. So you can imagine in 4-5 years if the GDP is say 40 lakh crore, 5 lakh crores, then our profitability of corporate sector can be, if you go at 8%, unbelievable. 40 lakh crores. No, when I say not the extent of the profit cycle, but the nature of the sectors which would contribute, because last credit cycle or the last earnings cycle was power, cement, steel. Will it be different from that? No, everybody will be profitable. I would say that I don't see much difference in this cycle in IT. IT because India is an exporter and a very large exporter, so IT is eternal. But I think I'm very bullish on metals, on infrastructure, on hospitality. Is the inflation fear, both locally and globally, overdone? That only time can tell. But there are factors in America which are going to reverse, which is price of second-hand cars. Certain factors. I think people feel there is a wage spiral in America. But I feel that a lot of people at the bottom who are given the checks, just checks were posted to them. Once that get over, then they will have no choice but to come to work. So difficult to say, what is in favor of inflation not exceeding estimates or expectations. The fact is that the biggest printer of money in the world has been Japan. And there is no inflation in Japan of whatsoever kind. So essentially low inflation is linked to demographics,
right, where population doesn't grow, and two, technology which allows cost to come down. Now, we've seen a panic in the global equity market after Fed changed their policy stance, let's say in December and early Jan. But US bond markets have been very mature. The 10-year paper is still not gone north of 2 or 3 or 3.5%, which this kind of an inflation. Why is that, sir? Because, you know, in America, the American interest rate is supposed to become 1.25%. What is a 1.25%? Right? So I don't think, and you know, the stock market has gone up in every rate increase cycle. So I think what I'd say is I cannot predict exactly what will happen in inflation, but what I feel is market is prepared for inflation. One of your favorite quotes is that interest rates, they act like gravity. Now we can debate whether it's going to be 3 hikes or 4 hikes, but globally and locally also we will come out of a patch of unusual low interest rates. That is over for sure. When will the law of gravity of higher interest rates start affecting asset classes? Well, see, when there are boom periods and I don't know about America, but you know, India, the space it is in, I don't think any increase of interest rates of 100, 200 basis point is going to affect corporate investment, or where it could affect is in consumption of houses. Because you can't have the 10-year at 6.8 and the home loan at 6.5. I don't think any other sectors are going to be so badly affected. चलिए, ये थे बिग बुल राकेश झुंझुनवाला हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया के साथ एक खास बातचीत में। पर इस सेशन में अभी के लिए इतना ही। अपना और अपना को ख्याल रखें। याद रहे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का अभी भी पालन करना बहुत ज़रूरी है।